टीआरडी का मतलब होता है दिन में 3 बार लेना होता है वो मेडिसिन। ओटी का मतलब होता है दिन में 1 बार लेना है। और क्यूटी का मतलब होता है कि मेडिसिन जो है हर दिन जो है एक दिन मतलब डेली लेना है वो मेडिसिन। क्यूआईडी का मतलब होता है कि दिन में 4 बार लेना है वो मेडिसिन। और एसओएस का मतलब होता है कि जब जरूरत हो तभी लेना है, जैसे पैरासिटामोल हो गया या दर्द की दवाई होता है उसका आगे एसओएस लिखा रहता है कि जब आपको दर्द हो तभी लेना है, या जब फीवर है तभी लेना है उसका आगे एसओएस लिखा रहता है। और एचएस या बीटी का मतलब होता है बिफोर स्लीप, यानी कि रात को डिनर के बाद और सोने से 1 घंटा पहले होता है वो बिफोर स्लीप, एचएस या पीटी लिखा होता है। बीबीएफ का मतलब होता है बिफोर ब्रेकफास्ट, यानी कि खाली पेट, जो खाली पेट होता है उसको बीबीएफ लिखा रहता है बिफोर ब्रेकफास्ट। और पीसी का मतलब होता है खाने के बाद, और एसी का मतलब होता है खाने से पहले। और यदि ओपीडी लिखा था, ओपीडी का मतलब क्या होता है, हम लोग ओपीडी हमेशा सुनते हैं। ओपीडी का मतलब होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी कि ऐसा पेशेंट जो एडमिट नहीं है या बाहर से आके कुछ सर्दी खांसी बुखार दिखाने आया तो उसको बोलते हैं ओपीडी, यानी कि वो रेगुलरली बेसिस पे दिखाने को ओपीडी पेशेंट बोलते हैं, ओपीडी डिपार्टमेंट बोलते हैं। और आईपीडी का मतलब होता है कि जो पेशेंट एडमिट है और उसका जो पर्ची होता है या उसके जो काउंट किया जाता है उसको आईपीडी में काउंट किया जाता है, इन पेशेंट डिपार्टमेंट होता है। और केयर ऑफ का मतलब होता है कंप्लेंट ऑफ, यदि आपकी दवाई की पर्ची में केयर ऑफ लिखा रहता है, जैसे कि आप डायग्राम देख सकते हैं केयर ऑफ, तो इसका मतलब होता है कि आपको जो कंप्लेंट ऑफ मतलब यदि आप डॉक्टर को बताएं हमें सर्दी हो रही है, खांसी हो रही है, बुखार हो रहा है, लूज मोशन या वोमिटिंग हो रहा है, तो डॉक्टर वो केयर ऑफ करके लिख देते हैं, जिसमें लिखा है कि वोमिटिंग 5 से 6 टाइम्स हो गया, ये सब लिखा है। केयर ऑफ का मतलब जो आपने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने जो किया वो। और ओई का मतलब ऑन एग्जामिनेशन, यानी कि आपने जो बताया वो तो ठीक है केयर ऑफ हो गया, लेकिन डॉक्टर ने क्या ऑब्जर्वेशन किया, तो जैसे कि ओई का मतलब डॉक्टर ने अपना ऑब्जर्वेशन जो बताया लिखा कि आपको टच करके छू करके देख करके आपने या पल्स रेट बीपी उसको बोलते हैं ओई है ऑन एग्जामिनेशन। और आरएक्स का मतलब होता है प्रिस्क्रिप्शन, जो आपको मेडिसिन लिखने से ऊपर लिखा है आरएक्स। टीएक्स आरएक्स टीएक्स का मतलब दोनों का मतलब एक ही होता है, ट्रीटमेंट या वो होता है। डीएक्स लिखा है इसका मतलब डायग्नोसिस, यानी कि आपको कौन सी बीमारी डायग्नोस किया है उसको डीएक्स लिखकर आगे बीमारी का नाम लिख देते हैं कि टाइफाइड मलेरिया डेंगू उसको डायग्नोस किया गया वो लिखा रहता है। एचएक्स का मतलब हिस्ट्री, या एचओवी लिखा रहता है हिस्ट्री ऑफ, तो भी एचएक्स मतलब आपका पास्ट हिस्ट्री में क्या था, कौन सी बीमारी थी आपने जो पेशेंट को बताया कि मैं पहले से था तो वो होता है। और एस एक्स का मतलब होता है सिम्पटम्स, यानी आपको क्या सिम्पटम्स या सिम्पटम्स या केयर ऑफ ये कम यूज होता है। सी का मतलब होता है सी के ऊपर में डैश लिखा रहता है और ऐसे लिखा है तो उसका मतलब वो यानी कि आपको मान लीजिए वोमिटिंग हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, तो वोमिटिंग सी लिख करके ऊपर ब्रैकेट लिख लिखेगा आपको लूज मोशन, तो इसका मतलब वोमिटिंग के साथ लूज मोशन हो रही है, या लिखेगा रिव्यू सी लिख करके रिपोर्ट, यानी रिव्यू विद रिपोर्ट, तो ये हो गया सी का मतलब होता है। और टेस्ट ऑब्लिक का मतलब होता है साइन एंड सिम्पटम्स, यानी आपको जो आपने साइन और सिम्पटम्स मतलब लक्षण जो होता है वो। और एसटीएटी का मतलब इमीडिएट, यानी इमीडिएटली उसको किसी मेडिसिन का स्टेट लिखा था स्टेट, यानी एसटीएटी का मतलब इमीडिएटली वो चीज करना है। और वीएस का मतलब वाइटल साइन, जैसे कि आपका होगा पल्स, टेंपरेचर, ऑक्सीजन लेवल, ये सब हो गया वीएस, वाइटल साइन होता है हमारा, रेस्पिरेशन रेट, हार्ट रेट, ये सब होता है। और कैप्सूल लिखा था इसका मतलब कैप्सूल, यदि पीएवी लिखा था इसका मतलब टैबलेट, और जो एसवाईपी लिखा मतलब सिरप, और यदि आईएनजी लिखा था इसका मतलब इंजेक्शन लिखा हुआ है। और यदि आईवी का मतलब होता है इंट्रावीनस, यानी कि नस के अंदर जो इंजेक्शन लगाते हैं उसको बोलते हैं इंट्रावीनस, जो नस में लगाते हैं उसको बोलते हैं इंट्रावीनस इंजेक्शन, आईवी इंजेक्शन। और जो आईएम लिखा था उसका इंट्रामस्कुलर, यानी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। A stroke occurs when the blood flow in part of your brain is blocked. After just a few minutes, the starved brain cells begin to die. Normally, the brain receives blood via 2 major pairs of arteries, which branch throughout brain tissue and supply your brain cells with a constant flow of oxygen, glucose, and nutrients necessary for their functions. In one type of stroke, ischemic stroke, an artery in your brain narrows or becomes completely blocked, preventing normal blood flow. The blockage may be caused by a blood clot, also called a thrombus, which forms in an unhealthy artery of the brain. The lack of blood flow causes the tissue the artery supplies to become starved or ischemic. Similarly, the blockage may be due to an embolus, a blood clot that forms elsewhere in the body and travels to the brain. The embolus lodges in a narrowed artery and obstructs blood flow. In contrast, during a hemorrhagic stroke, abnormal bleeding disrupts normal blood flow. For example, in an intracerebral hemorrhagic stroke, a blood vessel bursts, spilling blood directly onto your brain, while robbing the intended tissue of nourishment. Both the hemorrhage and ischemia destroy brain tissue. A subarachnoid hemorrhagic stroke occurs when a weak spot in a blood vessel wall, called an aneurysm, bursts and leaks blood into the tight space between your brain and your skull. The high-pressure bleeding results in serious damage to brain tissue. Immediate treatment for your stroke may help to minimize brain cell injury and death. If you have an ischemic stroke, you may be given medication to break up the clot causing your stroke. Later, your doctor may recommend surgery, such as carotid endarterectomy, to reduce your risk of having another ischemic stroke. In the case of hemorrhagic stroke, emergency surgery may be necessary to repair damaged arteries or reduce the pressure of the blood on your brain. You may be given medication to help the brain's blood flow return to normal. If you have acute coronary syndrome, you have one or more conditions caused by a blockage of blood flow to your heart muscle. This is a medical emergency because you may be having a heart attack, a condition in which your heart muscle begins to die. Your heart is a muscular organ that pumps blood containing the oxygen and nutrients your body needs. The main pumping chamber of your heart is the left ventricle. When your left ventricle contracts, it sends oxygen-rich blood to your body through a large artery called the aorta. Connected to your aorta are small arteries called coronary arteries. Blood flows from your aorta through the coronary arteries to supply your heart muscle with oxygen and nutrients. If you have acute coronary syndrome, blood flow through your coronary arteries is severely reduced or completely blocked. One possible cause of reduced blood flow is atherosclerosis. In this condition, a buildup of a fatty substance called plaque can narrow your coronary arteries. If this plaque ruptures, a blood clot can form and block the artery. A blood clot is the most common cause of coronary artery blockage. Other less common causes of reduced blood flow include coronary artery spasm or dissection. In a coronary artery spasm, triggers such as drugs, smoking, cold weather, and extreme stress or emotions can cause a temporary and sudden tightening of a coronary artery. During a coronary artery dissection, the inside wall of one of your coronary arteries separates, which can block blood flow. Regardless of the cause, a blockage in either coronary artery prevents the oxygen and nutrients in your blood from reaching the part of your heart supplied by the artery. As a result, heart muscle in that area starts to die. Death of part of your heart muscle is called a heart attack. It's also known as a myocardial infarction, or MI. A blocked coronary artery may also cause you to feel sudden pain, discomfort, tightening, or a burning sensation in your chest, called angina. This pain may extend to your upper abdomen, shoulders, arms, neck, and lower jaw. If you have angina when you're at rest, or frequent angina that prevents even moderate physical activity, you have unstable angina, which is the main symptom of acute coronary syndrome. Other symptoms of acute coronary syndrome include shortness of breath, dizziness, nausea, and sweating.
If you have a heart attack or have other types of acute coronary syndrome, your doctor may prescribe oxygen therapy to get more oxygen into your blood. You may take aspirin or other prescription blood thinner drugs to prevent blood clots. Thrombolytics, also known as clotbuster drugs, may be used to break up any existing blood clots. Drugs such as nitroglycerin and morphine will relax your coronary arteries and relieve the pain of angina. You may also receive drugs called beta blockers that slow down your heart and